Hi guys, a very good afternoon, and thank you, Kirtan, for a wonderful introduction. And it's beyond an honor for me to be here because I've lived the philosophy of National Geographic. I have, and I'm honestly saying this, I've been the biggest fan of National Geographic and the Yellow Window, and it means a lot for me to be here today. It's I look at it as a graduation in my life, and I'm actually I need to unlock my my excitement to feel very to tell you guys that I'm so excited not only to be the face of National Geographic, but to endorse a philosophy that I believe is very relevant in today's times, be it unlocking your boundaries, unlocking the fear, unlocking your fear, unlocking the truth. I think the campaign that we've done also symbolifies exactly all this. I think after, I must say this, Kirtan, after Madras Cafe, the maximum response that I've received is for the National Geographic campaign. And people have seen it, people have loved it. And for me, congratulations to the National Geographic team, Debbie and your entire team. All of you all have been fabulous in creating something that's so very special for all of us. I'm here, I'm excited. I'm a part of the Yellow Window. And I'm here to answer all your questions. But before that, I'd like for us to play an AV that I think symbolifies and speaks a lot about what I believe about myself and about my channel, National Geographic. So if you can watch it. The cockpit of a fighter jet, the front seat of a Maybach. I think all three. I must tell you, whenever I'm at home, I usually, unfortunately, don't watch GECs. I watch either sport or National Geographic. And outside of what you've said, because I love supercars, outside of what you've said, the one program that I really love is Mega Structures, because I come from a family of architects. And we as a family, when we get together, that is one program we watch together. So it's a lot of fun. There are a number of programs that we watch. I'm sure Kirtan has spoken about all of them. But the one that I'm most excited about watching is Inside IPL. And I'm sure that's going to be launched before the IPL. That's going to be launched just before the IPL. Yeah. Well, yeah, I've done a film a long time ago called Carl. And National Geographic was the sponsor on the film. And I mean, I didn't endorse the channel then, but the only thing I asked for was all the merchandising of National Geographic so I could put it up everywhere. So I still have a gypsy, and in the back of it I put up a National Geographic merchandising, Yellow window and the logo. Yeah, the yellow window logo. And so wildlife is something that's been very close to my heart, and that's one of the verticals of National Geographic. That's and I mean, there's so much that I love and do for tigers, elephants, and for stray animals. So when you see a channel that's, symbolizes all this and that actually stands for all this, you are most excited about being associated with it. So from the time of Carl, when National Geographic were the sponsors, till today, like I say, it's a graduation in my life to actually be the face of the channel. And I keep telling Kirtan, I wish I had a lifetime pass to be the face of this channel forever, because I really love National Geographic. जी मैं actually I was going to say मैं काफ़ी वाइल्ड हूँ नहीं मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ लाइफ में नेशनल जियोग्राफिक की जो फिलॉसफी है टू अनलॉक टू एक्सपेरिमेंट टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स मैं इन फिलॉसफीज़ में मानता हूँ
इनफैक्ट अभी कीर्तन से बात कर रहा था मैं, वो 2400 माइल्स अभी बाइक चला के आए इन अमेरिका इन रूट 66। तो मैं काफ़ी एनवियस और जेलस भी हूँ कि इन्होंने ये किया, मैंने अब तक नहीं किया। बट जस्ट लाइक दैट आई लाइक टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बेस कैंप में जाना चाहता हूँ, टू द हिमालयाज, मैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है एक दिन, एंड पीपल विल लाफ टुडे, शायद मैं करूँ, मैं काफ़ी क्रेजी चीज़ें करता हूँ, बट आई वुड लाइक टू एटलीस्ट क्लाइम टिल सम पॉइंट इन द एवरेस्ट। तो ये सब डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ मैं। वाइल्ड लाइफ पार्क्स में तो खैर हम लोग सब लोग जाते हैं, बट आई लाइक टू गो टू द अमेजोनियन जंगल्स, जहाँ पे आप नेशनल ज्योग्राफिक की अगर मैगजीन्स पढ़े या इनकी जो चैनल आप देखे, you see the way they shoot all their documentaries. It is the best looking ever. तो शायद मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. I'd like to be between animals. मुझे snakes बहुत पसंद है, क्योंकि ये कैंपेन में जब ये इन्होंने conceptualize किया, the one thing I really was excited about was the python, क्योंकि मुझे snakes बहुत ही पसंद है. मैं अगर if I would want to live my life, I'd love to live it between tigers and elephants and snakes. So that's my dream, to be in a wildlife area. तो काफ़ी कुछ मैं करना चाहता हूँ, करूँगा मैं, और थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा वक्त मिले शूटिंग से, I will go, and now I've got National Geographic to help me access those areas. वहाँ जाके and I'll enjoy my life. नहीं, पहले तो गैर कानूनी काम है अगर आप पाइथन को घर पे रखें, यू नो। नहीं, उनके लिए तो मैं टाइम निकालता हूँ, लेकिन आई वुड लव टू डू समथिंग। आपने पूछा पैशन के बारे में, एक तो मोटरसाइकिलिंग मेरा पैशन है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ मेरा पैशन है, एंड आई वुड रियली लाइक टू एक्सप्लोर दैट बाय गोइंग टू, क्योंकि अक्सर हम लोग हमारी जो लाइफस्टाइल है, लोग सोचते होंगे कि अरे फिल्म स्टार है तो शायद पेरिस जाएगा या लंदन जाएगा या यहाँ पे जाएगा वहाँ पे जाएगा, बट आई वुड लाइक टू गो टू द जंगल्स। वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास एक जिप्सी है, मेरी जो फिलॉसफी है काफ़ी अलग है। आई वुड लाइक टू गो टू द जंगल्स एंड एंजॉय माई लाइफ, सो प्रॉबेबली लिव द लाइफ दैट मिस्टर कीर्तन इज लिविंग राइट नाउ। कीर्तन मेरे एक्स बॉस थे जब भी मेरा जो MBA जब खत्म हो गया था। Colleagues थे हम, colleagues. Yeah. Pardon me? Enterprise Nexus, no, in Euro RSCG. यूरो RSCG में जब भी मैं इंटर्नशिप कर रहा था MBA के बीच में, तो मुझे मीडिया प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये मीडिया क्या है। तभी इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। उस वक्त पे वो NRS 4 था, नेशनल रीडरशिप सर्वे 4, तो वो बहुत बिजी थे, तो इतनी बड़ी किताब थी। He just threw the book on and said, study it. I said, yes sir. And I was just, तो कीर्तन मेरे गाइड भी है, इन अ वे काफ़ी अच्छे मेरे एडवाइज़र भी है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज इनके साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस मुकाम पे। सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर मी। इनको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। एक दोस्त भी है, एक वक्त पे उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। सो इट्स ग्रेट टू बी ऑन द सेम पोडियम विद हिम। Thank you, John. Thanks so much. जी हाँ, इन्होंने कहा मीडिया वालों से डर लगता है। नहीं, there's no this. We're all scared of the same things. डर हम सबको शायद फेलियर से लगता है, या लेकिन मैं फेलियर से काफ़ी कुछ सीखा हूँ। सो आई थिंक आई यूज इट इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव मैनर। डर मुझे शायद पता नहीं, काफ़ी हम लोग सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। आई थिंक आई गेट स्केयर्ड ऑफ द सेम थिंग्स यू गेट स्केयर्ड ऑफ। इमोशनली मैं काफ़ी सॉफ्ट हूँ। बाहर से तो जॉन इब्राहिम ऐसा लगता है कि ही कैन हैंडल एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट वी आर ऑल सॉफ्ट पीपल। हम लोग इंसान हैं। आई थिंक that's one of the things that when you watch the channel you'll learn that everybody fears things. It's conquering fear that's very important, and that's what you'll see people doing on the channel, conquering their own fears. Well, I'd love to contribute towards the content, but to start with that process, I think I don't know whether when we saw these slides, I am endorsing each and every media program, each and every media vehicle on the channel.
So be it mega structures, mega factories, be it the Inside series, be it Dangerous Encounters, be it Taboo, you know, each one of these programs I am endorsing individually for a start. And I think outside of that, when we develop content in the future, I'd love to be part of the process. And Madras Cafe has been, National Geographic has been very instrumental in helping us even with Madras Cafe. Yeah, we've had co-marketing and we work together on publicizing and promoting the movie as well. Yeah. John, जी मैंने काफ़ी विजिट किए इन इंडिया आउटसाइड विच वंस आर यू टॉकिंग अबाउट इंडिया में मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रह चुका हूँ 3-4 महीने के लिए क्योंकि 2 साल से हम यही एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ऑन टाइगर्स तो मेरे जो पार्टनर है माइक पांडे who won a green Oscar for his documentary on horseshoe crabs. Horseshoe crabs एक अभी आपको पता नहीं होगा they're practically an extinct species. तो उनको बचाने की कोशिश में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई and he got the green Oscar for it. His name is Mike Pandey. He's my partner. तो हम लोग टाइगर कब्स को शूट कर रहे हैं तो we've been traveling. I have stayed in core areas. उनको core areas बुलाया जाता है. Areas where usually you're not permitted to go and stay, only with special permission. So I have stayed a lot there. मैं काफ़ी familiar हूँ. Outside of India, मैं काफ़ी trainer से मिल चुका हूँ क्योंकि आपको ये भी पता नहीं होगा शायद because even I didn't know that at that point of time कि domesticated tigers are more than tigers in the wild. Domestic tigers in the US are more in number than the tigers in the wild in India. So मैं उन tigers से मिल भी चुका हूँ. काफ़ी प्यारे है मूडी है बट इट्स रियली नाइस और हमारे यहाँ शाहपुर में मेरे 50 या 35-40 बच्चे हैं द एलिफेंट्स के हमने अडॉप्ट किए हैं एंड शाहपुर में क्यों क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा कैचमेंट एरिया है और वहाँ पे हाथियों को काफ़ी पानी मिलता है तो उनकी जो ज़रूरत है वो पानी की ज़रूरत है दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड दे ईट जनरल वेजिटेशन तो उनको हमने वहाँ पे रखा है सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग ऑन द वाइल्ड लाइफ फ्रंट John, today we see there's a lot of passion and fashion in you. Can you tell me what brand are you wearing today? You want to know from the shoes to Yes. the top? Okay, first of all, I'm wearing a National Geographic t-shirt. Right. So that's the yellow window out here. And I'm wearing, but do brands matter below like what I'm wearing? Okay, I'm wearing Zara pants and I'm wearing Cole Hands shoes. It just looks too cool, so I thought let me just ask you. Thank you. And when it comes to animal, John, is there something, a creature or an animal that really freaks you out? Yeah. No, there is no animal that that really freaks me out. Absolutely, and I think that's the beauty of National Geographic, and that's why I'm in sync with them because I love animals. I'm sure everyone has an animal that freaks them out. My manager here, she gets freaked out by lizards and but I love animals generally. I think they're very sweet, and I think the only creature that really freaks me out is human beings because they manage to scare you the most. That was a good one. Well, it's the film's just started. I'm absolutely excited about doing the film, but I think that's a separate platform for it, and I'll speak about it on another day. But yes, I'm very excited about Welcome Back. Jay, I've not read the order, so I wouldn't be able to comment on it. I'm sorry. Yeah, she's fine. She got registered yesterday. Yeah. No, she got a number 3. Yeah. But she's fine. Yeah, I sent her to the registration on a flatbed. So.
Thank you. Thank you, everybody. Please join us. Don't right. Excuse me, sir. No, sir, look here. Sir, look here. No, sir, look here. Yeah. Okay. 5 minutes only. जॉन की ऐसी कोई 3 चीजें आपकी लाइफ में जो आप अनलॉक करना चाहते हैं? जी, जैसे कैंपेन में बताया गया है, आई वुड लाइक टू अनलॉक द ट्रुथ, आई वुड लाइक टू अनलॉक फियर एंड आई वुड लाइक टू अनलॉक बाउंड्रीज। मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं डरना नहीं चाहता एंड आई वुड लाइक टू नो द ट्रुथ अबाउट एवरीथिंग। हर चीज़ की सच्चाई, आई रियली लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। जो नेशनल जियोग्राफिक के शो, जैसे कि आप कहा आपका फेवरेट चैनल है, एक शो का आप अगर हिस्सा बनना का अगर मौका मिले, which show would that be? Yeah, I'd like to, in fact, should I look in front and say that? Okay. Yeah. Settle. Well, I'd like to be a part of many shows. काफ़ी shows है जो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन एक शो जो मुझे पसंद है वो ये डेंजरस एनकाउंटर्स है, और डेंजरस एनकाउंटर्स का मैं भाग बनना चाहता हूँ, हिस्सा बनना चाहता हूँ। एंड आई लाइक टू गो आउट इनटू द जंगल्स, और जो हमारे एनिमल्स है जिसे हम डेंजरस कहते हैं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। आई थिंक दैट्स माई ड्रीम इन लाइफ। जॉन, आपके लिए अनलॉक बाउंड्रीज क्या है? जी, अनलॉक बाउंड्रीज जैसे हमने दिखाया है कैंपेन में, मेरा एक फ़ोटोग्राफ एक यूनक के साथ, फॉर एग्जांपल, कि हम जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, जिनके हमारे माइंड में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आई थिंक आईड लाइक टू रियली गेट आउट ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस। हमारी जो ऑडियंस है, मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि यू नो वी हैव फिक्स्ड व्यूज़, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर फिक्स्ड व्यूज़ है, या गे मैरिजेस के ऊपर फिक्स्ड व्यूज़ है, या यू नो I'd like people to think outside the box and say that, listen, we must be accepting to different cultures, different emotions, different people. तो ये boundaries मैं unlock करना चाहता हूँ। I'm very audio here and I'm talking. जब भी आप किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं या फिर किसी चैनल को, क्या क्राइटेरिया रहता है आपका? जी, सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही रहता है कि एक ब्रांड फिट होना चाहिए। हमारी जो फिलॉसफी है वो मिलनी जुलनी चाहिए, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू एंडोर्स ब्रांड्स दैट आई डोंट बिलीव इन। जितने सारे मैं ब्रांड्स एंडोर्स कर रहा हूँ, इनकी जो फिलॉसफी है, आई लिव बाय दैट फिलॉसफी। और आपने मेरे एंडोर्समेंट्स देखे होंगे, आई थिंक फॉर्चुनेटली काफ़ी क्रेडिबल है और काफ़ी इनक्रेडिबल भी है। मैं बहुत खुश हूँ और खुश नसीब हूँ कि हम एंडोर्सिंग द राइट ब्रांड्स। तो ब्रांड फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीपल शुडंट सी जॉन अब्राहम इन अ ब्रांड एंड से यार ये कुछ मैच नहीं हो रहा है ये सही। You know, I think that's very important. John, you think same thing happens with the films that you do? I mean, the characters that you play on screen, people have a certain kind of expectations Right. from John. So you think that happens with films as well? Yeah, films as well. I think it's important to do all kinds of films, but it's important to do films that entertain. I like a certain genre of films, that's why I produce them, and films like Vicky Donor and Madras Cafe. But I like to do, people like to see me in films that are fun, like Dhoom, Dostana, and now Welcome and Dostana 2. So it's important to do all kinds of films, but my favorite genre is always going to be action and a lot of action, and I'm working with Nishikant again, so I'm very, very excited. Now you Sorry. Yeah, I think films and wildlife haven't been really attempted, and I think we
it's interesting that you're asking this question. We would like to do a film on wildlife, but do it in a credible way. And I don't think we've managed to do it in a credible way. I haven't figured out a script myself. I've just about figured out a script on motorcycling, and I'm working on a script on motorcycling. It may take me a year to develop, but I want the most intense, serious motorcycling film that India has ever seen. Not caricaturish. I'm talking about serious. Forget kindergarten and cartoons. I'm talking about serious motorcycling film, and for all motorcycling fans and people who are interested in that, but commercial film. And I'm working on it. So similarly like that, I'd like to see a film on wildlife too. Hopefully, maybe I can develop it, or some responsible producer can develop something that's very interesting. John, Last question. Such, like when you're a college kid, you really want to go trekking and things like that with your friends and experience, do a lot of backpacking. Have you done that when you're in college? I think that's why I'm endorsing a National Geographic, because I live my life like that. I live my life out of a knapsack, and I love trekking. I love mountain climbing. I love outdoors. So that's my space. When you like motorcycle, you can understand, right? I don't like being comfortable, because when you're comfortable, then you're safe. So I just like being outdoors. John, How are you? How are you? How good were you in geography, and how much marks did you get? I was very good in all my subjects. I was very good in geography. That's why I'm very good at National Geographic also. But yeah, I was very good in geography. Because I'm politically aware, and I'm aware about countries and everything. So I like being aware about which country is where, and everything. It's very, very interesting. जॉन बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सितारे हैं जो कि छोटे पर्दे पे अब नजर आ रहे हैं. अगर जॉन इब्राहिम को एक मौका मिले तो कौन सा ऐसा एक शो होगा जो वो होस्ट जी मैं नहीं होस्ट करूँगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन द स्मॉल स्क्रीन एज ऑफ येट. मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है टू गो देयर. आई एम फिट फॉर द लार्ज स्क्रीन एंड आई विल स्टे देयर. Okay, thank you. We're done. Also, have you shortlisted any titles for Hamara Bazaar, like you said about the court order and all that? No, that was always a working title. I don't know why people get excited, but that was always a working title. We had never registered it. But fine. Like I said, I'm tired of litigation, so it's over and out. I don't want to talk about it. Welcome back. Welcome Back is a completely different character. I think the best case in point is like Amir in Rangila. I think, to give you an idea, so it's a lot of fun, but it's still very different. But yeah, I think that's a template, and it's going to be a lot of fun. People are going to be shocked to see me in a completely different avatar, and I hope I can shock them positively.